Hello everyone. I hope you are doing well. In this video, we talk about what is the inline frame in HTML5 as well as web hosting, and finally we conclude the whole chapter that is advanced web designing. Whatever we study in this chapter. Okay, so let's start with the inline frame in HTML. The iframe inline, that is inline frame. Iframe is the tag related to inline frame element. Okay, iframe element creates an inline frame. Inline frames are often used in online advertising where the contents of the iframe is an advertisement for external party. देखिए क्या होता है कि आपने कभी कोई वेबसाइट जब भी विजिट की होगी, जैसे कि कोई गाना.com या फिर सॉन्ग पी के वगैरह, ऑल दिस वेबसाइट्स, वहाँ पे आपने एक ब्लॉग देखा होगा जहाँ पे हमेशा एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। और जो जिस ब्लॉक में वो एडवर्टाइजमेंट रहती है उसे कहते हैं आप इनलाइन फ्रेम। तो क्या होता है कि हम अपने वेब पेज में जब भी हम अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं, उसमें एक एरिया अलाउ करते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस और फॉर एक्सटर्नल पार्टीज। मतलब कोई भी उस स्पेस को यूज़ कर पाए अपनी एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी कंटेंट शो करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ द आई फ्रेम। ओके, सो HTML5 allow incorporation to seamless, मतलब नो स्क्रॉल बार्स, बॉर्डर्स, मार्जिन एक्सेट्रा। सो उसमें क्या होता है कि ना स्क्रॉल बार होता है, ना ही बॉर्डर्स होती है, ना ही मार्जिनस होती है, राइट। सो उसमें सिर्फ हमें हाइट विड्थ एडजस्टमेंट करके उसे फ्रेम को बनाना होता है। सो लेट्स, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। हम सबसे पहले एक इनलाइन फ्रेम क्रिएट करेंगे, उसमें हम पूरे एट्रीब्यूट्स को वन बाय वन यूज़ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द नोट पैड। So let's put the tag. First I put here some h1. This is example of iframe. Okay, in inline frame. So here is the tag iframe. Okay, iframe is equal to src. So our first attribute is what? src means source, वेयर। सो हम अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसमें एम्बेड करना है, HTML डॉक्यूमेंट, सो और फिर और एनी ऑफ URL also embedded in this attribute, okay, with the help of this attribute। so हम एक फाइल चूज करेंगे, src is equal to
सिंपल यही करते हैं, image map dot html, rename, 1 minute, rename, control C, control V dot html, right? Then height is equal to, what next attribute is height. Whatever be size of that frame, that is specified on height attribute to giving proper pixel whatever we want. Okay, so let's give some pixels. I give 400 px, and width is equal to 300 px. Okay, so save as 1 minute, save as all files, and all files. Inline frame, inline frame dot html, save. Okay, inline frame dot html, and it show the inline frame because of 1 minute. I see no scroll bar, and our line shows. Inline frame shows because of their height. It shows us pro scroll bar. Okay, 1 minute. I adjusted that height. Okay, 500 px, and it's okay. So okay, again it shows me one minute. We have to adjusted height weight also. 700 px. File, save, and run. Okay, this is the frame. Okay, this is the inline frame. Whatever in our web page, what are we allotted to the third party to their advertisement or all other purposes. Okay, so our next attribute in inline frame is name. So we can name that inline frame as name is equal to inline frame example. Okay, file, save.
uh, the name is work as a target of any. If I create one hyperlink and I want to show some web page on that area, uh, except imagemap.html, then I show that image there also with the help of name. Okay, so let's try with how can we use a name. Okay, suppose I create a href is equal to some other file, 1 minute, form demonstration, rename, control C, and control V, paste here dot html, and give the target is a element which targeted that area. Okay, that is the attribute of ahref. Okay, target is equal to, देखो समझो, सिर्फ यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम जो भी आई फ्रेम में नेम एट्रीब्यूट जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, राइट। सो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। इतना इतना तो हमें पढ़ना नहीं है, इसके बारे में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एक एडिशनल नॉलेज के तौर पे आप इसको देख लीजिए। स्लैश ए स्लैश ए and target is inline frame exam, control C and control V, and the key is click here. Okay, so save, let's try to run, क्लिक किया। देखिए जो भी मेरा टारगेटेड एरिया है, जैसे मैंने उसे क्लिक किया उस एरिया पे उसने जो फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन वाला जो पार्ट था, HTML फाइल थी, वो शो कर दी, राइट। देखिए अभी जो है हमारी कौन सी फाइल है यहाँ पे, imagemap.html, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा वो शो करेगा मुझे फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, सो देखिए कैसे भी हम उसके टारगेट किसी भी इसको यूज़ करके हम उसके टारगेट में किसी भी एलिमेंट को शो कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द एट्रीब्यूट नेम, एंड आवर नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज source doc. Okay, source doc. What is source doc? I will show you. पहले देख लेते हैं सोर्स डॉक्स क्या होता है। सोर्स डॉक HTML कोड। ओके, जो भी हमारे वहाँ पे जो भी एलिमेंट हमें पुटअप करना होगा वो क्या होगा, HTML डॉक, उसकी वैल्यूज जो रहेगी, ठीक है। HTML कोड, it specify the content of the page to show in the iframe. Okay, so let's use it. src source doc is equal to I used h1 tag, h2 tag. Okay, h2, this is here is example of src doc. Okay, slash h2 and save. Okay, let's see what happened.
देखिए, here is the example of source doc after clicking here. ओके, सो अभी देखिए, जैसे हम यहाँ पे सोर्स और सोर्स डॉक एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। अभी जैसे ही वो सबसे पहले जो एलिमेंट उसको मिलेगा, उस सबसे लास्ट जो एलिमेंट मिलेगा उसको वो शो कर देगा, राइट। सो लास्ट एलिमेंट इज द सोर्स डॉक, सो दैट्स व्हाई इट शोज this code only. Okay, so this is the iframe. uh, so our next topic is the web hosting. Okay, what is it देख लेते हैं। in this chapter we have seen how to create a website. हमने देखा कि इसमें क्या किस तरह से हमने वेबसाइट क्रिएट की। But just creating a website is not sufficient. One has to make a website available on internet. These web pages are stored in web server that are connected to internet to made available to other. क्या होता है देखो, अभी हमने तो पूरा HTML कोड सीख लिया, वेब पेज कैसे बनाना है वो भी सीख लिया, राइट। बट अभी हम जो कर रहे हैं वो किस साइड में, हमारे एक लोकल मशीन पे, राइट। अब उस लोकल मशीन से हमें उसे अवेलेबल करवाना पड़ेगा यूज़र्स के लिए। सो उसके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो सबसे बड़ा हमारा नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट, राइट। एंड इंटरनेट इज़ कनेक्टेड टू डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे वेब पेज को हमें एक पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर करना पड़ेगा एंड गिव एक्सेस टू द यूजर्स टू यूज आवर वेबसाइट। ओके, सो यही होती है वेबसाइट। चलो एक थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अभी इसको। व्हाट इज वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग इज द सर्विस प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस द वेबसाइट इज मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वेब होस्टिंग। अभी क्या होता है कि इंटरनेट में ये एक टाइप की सर्विस है जो हमें रिलायबिलिटी देती है कि हम अपना जो भी वेब पेज है वहाँ पे स्टोर कर सके और उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सके and normal users also and give reliability to use to normal users, okay, to access our web page. Okay, so that is the web hosting. What is the web host? The company that provide a web hosting service are called the web hosts. Web hosts own and manage web servers. These web servers offer uninterrupted internet connectivity. अभी देखिए, वेब होस्ट को कौन होते हैं? अभी ये कौन होते हैं, जैसे कि आपने सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम सुना होगा जो वेब होस्ट करवा के देते हैं, जैसे कि GoDaddy.com या फिर Amazon.com। ये सब क्या है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। ये क्या करते हैं, उनके ऑलरेडी सर्वर कनेक्टेड है इंटरनेट से, वो हमें एक स्पेस देते हैं उनके सर्वर पे to upload our data on their server, and they connect it to the they show their our data to in to connect our data to internet, and it is available to all the users. So that is the web host. उसके लिए वो अलग अलग चार्जेस ये करते हैं। उसके टाइप्स है, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग कौन कौन से। शेयर्ड होस्टिंग, इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव, इट गिव्स डोमेन नेम टू योर वेबसाइट। अब इसमें डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम जैसे .com, .in, .gov, that all are the domains, and all domain require various amount different amount to their service. Okay, free hosting, 1 minute. There are some hosting website which provide you free hosting of website for limited period of time. अभी फ्री होस्टिंग में क्या होता है कि कुछ कुछ वेब होस्ट कंपनीज जो है वो क्या करती है, उनको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है फॉर लिमिटेड टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो सो दैट इज द फ्री होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग, दीज आर द पेड होस्टिंग सर्वर फॉर लार्ज वेबसाइट्स। ओके,
अभी क्या होता है कि जैसे मेरी बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो मैं क्या करूँगा, अपना एक सर्वर यूज़ लूँगा, ठीक है, परचेस करूँगा और उसको कनेक्ट करूँगा इंटरनेट से and put my website to that my own server and publish our website. Okay, so that is the वेब होस्टिंग. वेब होस्टिंग में इतना कुछ नहीं है, बस यही है. अभी उसको प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से ही इसे हमें पढ़ना है, राइट. सो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, राइट. 1 minute. These are the addition. So students, first we see what is the HTML and how it works and what is their use. Then we see the what are the features of HTML. Okay, basic structure of HTML and types of tags, pair tags, unpaired tags, uh, various version of HTML. Okay, and main thing is we see what are the forms in HTML and see what are their attributes. Okay, after that what are the input restrictions put on that form elements. Okay, and again we see what are the id, what are the class, what is the meta tag, meta, what is how it use and how it why it's important to our uh, website. Mm, this is this is the attributes of that and again then we move the css for decoration for display purpose, how it how can we uh, display our website properly and how it attractive and responsive, that is show that is we learn in css. Okay, uh, we see what are their types, that is inline css, embedded style sheet and external css, and we use also in our files. And then we see css properties, what are color, background color, font weight, font style, text decoration, text align, what are the font families, all these things we see. And then we move to selectors. Okay, selectors is the cs selector, id selector, class selector, unit selector and group selector. That css id selector is denoted by hash character. Okay, and css class selector is uh, initialized with dot symbol. Okay, all these things. And the universal selector is a simple put star around that uh, description definition area, that is curly braces. Okay, see where again we see the what is the position in the css, what is float property. And lastly we see audio tags, video tags, insertion of audio and video tags in html5. And finally today we see what is the inline frame in HTML. And with web hosting we completed this chapter. So in next video we see about see our next chapter, that is introduction of SEO, that is search engine optimization. So today we stop here students. Stay safe. Goodbye.